Haflong citizens worship for rain. Haflong citizens have been suffering from an acute water crisis for the last few months. Since there has been no rain, most of the water sources have dried up. The Public Health Engineering Department has failed to cater water in Haflong town remarkably. Finding no other way and there has been no hope for rain, Haflong citizens arranged to worship Mother Ganga to be kind to them. Finding no other way and there has been no hope for rain, Haflong citizens arranged to worship Mother Ganga to be kind to them. A large number of people thronged at the Haflong Bazar Kalibari to offer their prayers and worship her. The organizers said this special puja has been organized to please Mother Ganga so that rain comes and removes the water crisis at Haflong. They also appealed to the people in general to join today's worship of Mother Ganga for rain. सभी लोगों को पता है अभी हाफलॉन्ग में वाटर स्कार्सिटी चल रहा है, हर तरफ में पानी का क्राइसिस है, बारिश भी नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि दूसरी दूसरी जगह पे बारिश तो हो रहा है, लेकिन पता नहीं इस बार हाफलॉन्ग में क्या हो गया, एकदम बारिश नहीं हो रहा है। तो सभी लोग हाफलॉन्ग के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो हाफलॉन्ग बाज़ार कलिबरी कमेटी है, उन्होंने सोचा कि भगवान को बुलाने का टाइम आ गया, इसलिए हम लोगों ने मंदिर का पूजा रखा गौरव करके। सो आशा करते हैं कि भगवान हमारे पर सभी पर आशीर्वाद अपना रखे और जल्दी से जल्दी बारिश दे ताकि हम लोग में ये जो पानी का प्रॉब्लम है तुरंत सॉल्व। आज जो हम लोग हाफलॉन्ग काली मंदिर में पूजा दे रहा है उसका मेन कारण है हाफलॉन्ग में इतना दिन से बारिश नहीं हो रही, तो पानी के लिए सबका प्रॉब्लम है। वह सोच के हम लोग इंद्र देव का पूजा का आयोजन किया है और पूरा हाफलॉन्ग वासी का मंगल कामना के लिए हम लोग ये पूजा दे रहे हैं। आप लोग सब भी भगवान को प्रे करिए क्योंकि हम लोग जो भी है सब सारा सब कुछ भगवान का ये है, वही बोल के मेरा